हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एट डाउट क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन, so that any positive odd integer is of the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer. Clear? तो हमें ये शो करना है यहाँ पर कि जो भी ऑड इंटीजर होते हैं उन्हें हम 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। क्लियर? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे हम ले लेते हैं v इज इक्वल टू 6। तो बाई द यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यू प्लस r। क्लियर? where r is remainder. When we divide any positive integer by 6, the possibility of remainder may be 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Because of r is less than b or greater than equal to 0. क्लियर? तो b की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 है, तो b की वैल्यू, तो अब हम देखें तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 6। तो जो r का जो वैल्यू होगा वो 6 से कम होगा और 0 तक हो सकता है। क्लियर? Then the possibility of the number will be 6 plus 1, 6 plus 2, 6 plus 3, 6 plus 4 and 6 plus 5. Clear? We know the even number are those which exactly divisible by 2, or it can be written as 2n. क्लियर? यानी कि जो ऑड इंटीजर होते हैं 2n+1 की फॉर्म में, एंड जो इवन इंटीजर होते हैं वो होंगे हमारे 2 की फॉर्म में, यानी कि 2 के मल्टीपल की फॉर्म में। क्लियर? अब हम यहाँ पे लेते हैं 6q को। अगर हम यहाँ से 6q में से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3q। क्लियर? देन द 2 इज द फैक्टर ऑफ 6q, देन we put the 3q as m1, then it gives 2m1. Clear? Now 6q plus 1, if we factorize 6q, then 2 into 3q plus 1, here we put 3q is equal to m2, then we can write it as 2m1, 2m2 plus 1. Clear? Next is 6q plus 2 is equal to, when you factorize it, it gives 2 common and 3q plus 1. तो यहाँ पर हम 3q plus 1 को m3 मान लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2m3. क्लियर? नेक्स्ट इज 6q plus 3. We can write it as 6q plus 2 plus 1, and we factorize it 2 as 3q plus 1, then it leaves the remainder 1.
If we write 3q plus 1 as m3, because m3, then it gives 3m 2m3 plus 1. Clear? Now we take 6q plus 4, then factorize it by 2. 2, 3q plus 2, it gives, if we write the 3q plus 2 as m4, then it gives 2m4. Clear? Next is 6q plus 5, then we write it in the form of 6q plus 4 plus 1 is equal to, factorize it by 2, then 2, 3q plus 2 plus 1, and 3q plus 2 as m4, then it gives 2m4 plus 1. Clear? Now we discuss about the even or odd number. The even number are those which exactly divisible by 2, and the odd number are those which are not exactly divisible by 2, because 2n is divisible by 2, but 2n plus 1 is not divisible by 2. Then we can say the 6q plus 1 gives as form 2m2, 6q plus 1, and 6q plus 3, which also gives as a form 2m3 plus 1, यानी 6q plus 3 and 6q plus 5. तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो हमारे फंक्शन 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो वो हमारे 2n प्लस 1 की फॉर्म में रखे जाएंगे। और ऐसा ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने 6q प्लस 1 को फैक्टराइज किया तो उसने 2m1 प्लस 1 दिया, 2m2 प्लस 1। अगर हम यहाँ पर देखें 6q प्लस 3 तो यहाँ से भी हमें मिला 2m3 प्लस 1। एंड अगर हम 6q प्लस 5 को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है 2m4 प्लस 1। अगर हम m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4 रखें m के बराबर, तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा 2m प्लस 1, और ये भी आएगा हमारा 2m प्लस 1, एंड इट ऑल्सो बी 2m प्लस 1। Then all these three numbers are of in the form of odd number. Then we can say all positive odd integer can be written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, and 6q plus 5. Clear? And the next question is, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. In this question, the 6016 members is to be marched behind 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 616 मेंबर हैं आर्मी के और उन्हें 32 मेंबरों की टोली के पीछे मार्च कराना है। अब ये कह रहा है कि उनके 32 मेंबर, अभी क्या कह रहा है, द टू ग्रुप्स, यानी कि दो ग्रुप बनाए गए हैं, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी दो ग्रुप जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रहे हैं दोनों ग्रुप। यानी कि एक ग्रुप तो ये हो गया
32 मेंबर्स का और एक ग्रुप जो है इनका हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि उनके जो कॉलम है वो सेम होने चाहिए। तो कॉलमों की संख्या मैक्सिमम नंबर, देन it is given that the maximum number is to be find, then we can say the HCF of both of these number is the maximum number of columns. Clear? Then we can say the maximum number of column is the HCF of 616 यानी 6016 and 32. Clear? Now by Euclid's algorithm, यहाँ पर क्या है कि 6016 is greater than, since 6016 is greater than 32, then we can write it in the form of 6016 is equal to 32. By 19 times it leaves the remainder 8. क्लियर? यानी अगर हमें 32 का डिवाइड करना है 6016 में, then we can say the 19 time of 32 gives 616 and leaves the remainder 8. Clear? Then we know we repeat the procedure in Euclid lemma till the remainder 0. Here r is not equal to 0, यानी जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक हमें ये मेथड रिपीट करना है। Then here r is not equal to 0, then we again repeat this step. 32 is equal to 8, 8 4 is 32 plus 0, yani when we goes to 32 by using 8, the full time of 8 goes to 32 and leaves the remainder 0. Then here r is equal to 0, then we can say the HCF will be 8. Then we can say the maximum number of columns will be 8. Clear? Now the next question. In this question, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either a form of 3m or 3m plus 1 for some integer n. यानी हमें ये प्रूफ करके लाना है अब कि पॉजिटिव किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर आएगा वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। क्लियर? लेट a is any positive integer as bq plus r. Clear? Because we is to be proved that the square is in the form of 3m and 3 or 3m plus 1, then we take the value of b as 3. Clear? Then a will be equal to 3q plus r. If we divide any positive integer by 3, it the possibility of remainder may be 0, 1 or 2, because r is greater than equal to 0 or less than b. Clear? Here b is 3, then r may be 0, 1 or 2. Clear?
then a is equal to 3q and 3q plus 1 and 3q plus 2. Clear? Then the possibility of the number will be 3q plus 1 and 3q plus 2. Clear? Because क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि जो आर का वैल्यू है वो 0 1 2 हो सकता है, तो अगर हम आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है नंबर की कि 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में हमें नंबर फाइंड होंगे। क्लियर? थ्री क्यू प्लस 1 and 3q plus 2, because it is to be proved the square of any positive integer. Then we square the number, then we can say square the numbers, then it gives 3q square is equal to 9q square, यानी 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस वी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस वी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर। क्लियर? देन इट गिव्स 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अगर हम यहाँ से इनको फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने पर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो ये देगा हमें 3q स्क्वायर प्लस 2q, एंड ये जो 1 है वो हमारा शेष रह जाएगा। एंड हियर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमें देगा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12q एंड प्लस 4। क्लियर? And we can write it as 9q square plus 12q, because 4 is greater than 3, then we split as 3 plus 1. Clear? If we take 3 common from 9q, it gives 3 into 3q square. Clear? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट वाला जो नंबर है उस नंबर को हम m मान लेते हैं, यानी 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m1, देन इट becomes 3m1. Clear? In this, let 3q square plus 2q is equal to m2, then it becomes 3m2 plus 1. In this, we take 3 common as 3, then it gives 3 into 3q square plus 4q plus 1, and it is as plus 1. Clear? Here let 3q square plus 4q plus 1 as m3, then it becomes 3m3 plus 1. Here if m1 is equal to m2 is equal to m3 as m, then it becomes 3m, it 3m plus 1, and it is in the form of 3m plus 1. Then the possibility, यानी कि जब हमने किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आई केवल 3, यानी सभी नंबर 3 प्रकार से, यानी कि 3 मेथड्स से जो है डिवाइड हो सकते हैं। चाहे हम कोई भी नंबर ले लें, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। Then we can say the square of all the positive integer can be written as 3m and 3m plus 1. Clear?